Hey, you awesome one there. My name is Shagun और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट के बारे में. So let's get started. Go to the storage account directly, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Azure Services में, या फिर आप create a resource option यूज ले सकते हो, या फिर आप marketplace से जा सकते हो, whatever suits you. So I'm going with this one. You will click on create option and then you will see this our subscription because I am using a free trial. तो यहाँ पे मुझे वो शो कर रहा है. अब एग्जिस्टिंग आइटम बिकॉज ऑब्वियसली हम किसी रिसोर्स ग्रुप में ही हमारे स्टोरेज को स्टोर करेंगे. सो देयर इज नो स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप, सो लेट्स क्रिएट वन. हम इसका नाम कुछ लेट्स से डेमो STG. Okay, let's not give STG but RG. So okay, we'll create one. I'm so sorry. So demo and then RG. Okay. एंड इसके बाद हमें एक स्टोरेज अकाउंट का नाम देना है. इसके लिए कुछ फिक्स कंडीशंस होती है विच आई वुड लाइक टू शो यू, जैसे कि वी कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक इफ आई गो डाउन. सो आप ये रीड कर सकते हैं that it should be greater than 3 characters and lesser than 24 characters or in between them, and only lowercase is allowed and numbers are allowed. So बाकी सब चीजें we can remove. So I'll give this storage a name as ADLS. अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस मेनली अवेलेबल होते हैं जब हम Azure स्टोरेज अकाउंट की बात करते हैं. वन इज द ADLS स्टोरेज अकाउंट एंड द अदर वन इज अ ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट. ADLS स्टोरेज एंड ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, बट फॉर नाउ डेमो के लिए मैं आपको एक ADLS स्टोरेज बनाना दिखाऊंगी एंड आई विल आल्सो टेल यू in brief ki how can you make a blob storage. So just to follow a naming convention, I will give it as ADLS, and for since it is a storage, so ADLS STG and demo. Let's see if we have this name available. Oh great, we have. And I'm going to choose locally redundant storage because redundancy we can discuss someday later, but if in brief I would tell you locally redundant has the lowest cost. और उसके बाद we have GRS, ZRS and Geo zone redundant storage. Basically this tells कि आपका storage का data कितनी बार replicate होगा और कहाँ store होगा. Should it be locally stored or geo redundant, zone redundant and geo zone redundant storage. So whatever it is, अब ये जोन कैसे डिसाइड होते हैं, जियोग्राफिकली कैसे डिवाइड होता है, सो आई विल टेल यू दैट आल्सो बट इन अनदर वीडियो. फॉर नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट द स्टोरेज. सो I'll choose locally redundant storage and other things I'll keep the same. I'm keeping the region as East US, or we can change it to something which is close to us because I am in India. So let's see what we have for India. I don't think we have any. Okay, we have Asia Pacific. Okay, I'll also like to tell you that in Asia what happens is that for some of the things और रिसोर्सेस आपके पास हमेशा रीजन का ऑप्शन नहीं होता. हर रीजन में हर सर्विस अवेलेबल कहीं पर नहीं होती. सो यू शुड इफ यू वांट टू चेक व्हाट आर द मैक्सिमम सर्विसेज अवेलेबल इन विच रीजन, तो आप डेफिनेटली एक अश्योर के पेज पे जाके लॉग इन करके चेक कर सकते हैं इसके बारे में. फॉर नाउ like I will choose East US because it has lot of services जो कि उसमें अवेलेबल है. So I will go with whatever was existing. So I'll choose East US and then LRS. We'll go to advanced section and it says, so I'm not going to change anything in the security. It says require secure transfer for REST API operation. Yes, we want. Enabling anonymous access on individual containers. मीनिंग ये है कि कुछ कंटेनर्स पे आप इस तरह के एक्सेस अलाउ कर सकते हैं कि कोई भी अनोनिमसली आके और इसे एक्सेस कर देगा और उसका बेसिकली कोई लॉक क्रिएट नहीं होगा. बट हम फिलहाल के लिए ऐसा नहीं चाहेंगे, और अगर हमें चाहिए भी होगा तो वी कैन गो ऑन कंटेनर वाइज एंड वी कैन definitely enable this particular for that container, but right now we are not choosing this option. Now
डिफॉल्ट टू इनेबल स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस. सो हमारे पास स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए अलग मेथड होता है. वन ऑफ द मेथड इज यूजिंग स्टोरेज अकाउंट की. सो डू वी वांट दैट मेथड और नॉट? सो यस, वी वांट दैट मेथड बिकॉज ऑथराइजेशन में हम कहीं ना कहीं इसको यूज करने वाले हैं. डिफॉल्ट टू Microsoft Entra authorization in the Azure portal. So क्या हम AD based authentication available sorry default use करना चाहते हैं? So right now we will not tick it. Let's keep it as it is. Now this is a TLS version. Latest is 1.2 and इसके पहले वाले versions में हम use ले सकते हैं, but this is the latest one and इसके साथ काफी चीजें हैं जो कि compatible हो पाती है. So we'll go with this version. Now, permittable scope for copy operation. So we are keeping it from any storages, or you can decide if you have some company constraints or you have a confidential projects kind of thing. So, and this is a preview feature. So, you know, we're just checking on it. Okay. So now comes the main point, hierarchical namespace. मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे पास स्टोरेजेस में Azure में दो ऑप्शन होते हैं, either we choose for ADLS and blob. एंड जब हम ADLS यानी कि Azure Data Lake Gen 2 स्टोरेज क्रिएट करते हैं, सो वी नीड टू इनेबल हायरार्किकल नेमस्पेस. अब ये हायरार्किकल नेमस्पेस क्या है, क्यों है, आई विल टेल यू, बट जब हम कंपेयर करेंगे ADLS एंड ब्लॉब को. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टिक ओवर दिस ऑप्शन सो दैट हमारा ADLS टाइप का स्टोरेज क्रिएट हो जाए. Okay, I want the SFTP transfer to be there. Okay, so I will enable this. And blob storage ka then see blob storage का access, this doesn't mean literally blob storage, but it is like कि आपके जो containers होते हैं उनका type हमेशा blob होता है. So it is asking कि जो आप blob access करने वाले हैं, how do you want it to be? Should it be hot or cool? Now hot means that you are going to frequently access it. Means अगर आपके everyday usage में data है, so you should choose hot. And if आपको data रोज access nahi karna hai, maybe you want to access it weekly, monthly, like that, then you can go for cool tier. Because hot tier में हमें access cost कम पड़ता है, जबकि retrieval cost हमें थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, but cool tier में it's better because you can retrieve the data, but access cost थोड़ा सा बढ़ जाता है. So this is about the access tier. Okay. And then you have Azure files, so enable large file shares. Right now we are not going to share anything which needs file shares to be enabled for large file shares. So I'm keeping it as is. We'll go to the networking section. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी particular private network पे work करें, so you can definitely go with the last option, disable public access. And if you want a combination of public access from particular networks, you can go with it. Or otherwise, if आपको कोई problem नहीं है, तो आप अपना publicly accessible storage रख सकते हैं. Network routing, either you can go with the Microsoft network routing जो कि Microsoft अपनी तरफ से provide करता है, or you can opt for internet routing also, but I'll keep it Microsoft network routing. Comparatively, I believe this should be more secure than internet routing. Coming to next section, which is data protection. So one is soft delete for blobs. Now if I tell you what is soft delete, that means that अगर आपने कुछ delete किया है, सो क्या होता है कि लेट्स से कि आपका कोई फाइल था, आपने डिलीट कर दिया, सो फॉर हाउ मेनी डेज वो आपके स्टोरेज के टेम्प कंटेनर में रहेगा. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन अ लेमैन टर्म्स, तो कितने दिन तक वो ब्लॉब हमारे पास फिर भी एग्जिस्ट रहेगा और हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं. जस्ट लाइक कि आपके फोन के अंदर एक बिन होता है, when you delete the things it goes into that bin, और finally permanently वो delete जब भी होता है जब आप उस bin से भी उसे delete कर देते हैं. and if you don't delete तो उसका भी एक expiry time defined होता है कि अगर इतने दिन में आपने delete नहीं किया तो वो bin अपने आप ही automatically clean हो जाएगा. so that time is कि हम deleted blobs को कितना time रख सकते हैं, तो 7. now blobs is your basically files or yeah you can say files basically जो आपको रखनी है. so if you're that is the 7 days. now containers क्या होते हैं exactly, that I'll tell you when we have the ADLS ready. so ADLS, and then the finally there is enable soft delete for file shares. so file shares is again one more options in.
स्टोरेज अकाउंट. सो हम इन सब के लिए डिफॉल्ट रखते हैं. वी कैन कीप इट 97 वट एवर वी वॉन्ट. And if we check the limit, I guess it is 90, but if I keep it 120, okay, so we have 1 to 365, so we are keeping it for 7. So basically हम एक साल तक 365 days तक किसी डेटा को प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन सॉफ्ट डिलीट. Now access control, all these options are already not available for us, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एनक्रिप्शंस पे अगर हम आएंगे तो विल कीप द सेम. माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज अगर आप चाहें तो खुद की कस्टमर मैनेज कीज बना सकते हैं. देन वी हैव एनेबल सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज कीज. सो यस, डू यू वांट टू यूज ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज? नाउ हमें जो Azure स्टोरेजेस होते हैं वो 4 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ब्लॉब्स की, फाइल्स एज इन जैसा आपका फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडोज होता है उस टाइप का सिस्टम. Then we have tables. You can store the data in form of tables also, and queues for storing. And you can choose whatever you want to use. So blobs and files only for now. And I don't want to enable infrastructure caption encryption. Sorry. And finally we have tags. अगर हमें कोई देना है जैसे कि इसके अंदर if you want to, जैसे आपका कोई department है, if you're making for a company, so you can mention department और उसकी value IT, accounting, finance, whatever it is. I'll give those type of tags. Tags basically हमें help करते हैं कि हम identify कर पाए कि ये storage account किसके लिए use हो रहा होगा. Okay, so now finally to the review, and we'll see कि everything is working fine. If it has all the required details, तो ये validation हमारा pass हो जाएगा. We have got the create option. That means validation is completed. So we'll just click on create. The storage account creation should take around 2 minutes maximum. Mostly that's what's the time it takes. So that's it. Oh great. तो हमारा resource बन चुका है, and we'll go to resource. So you can see it is ready. Oh, so it says that enabling SFTP on Azure Blobs has hourly billing impact. So maybe we will disable this option. See you guys in the next video, and then I'll show you how the ADLS works.